Now, when the minute we talk about concept of facility location, okay, what comes to your mind? अच्छा, What is मतलब a फैक्टर्स आप बात कर रहे हो? हाँ मतलब मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि the minute you hear the term facility location, आपको दिमाग में क्या आता है, थॉट्स क्या आ रहे हैं? The location of area where the factory is located. Okay. The question of Very- machinery in which sequence it should be kept. Sorry, can you please come again? Okay, the machinery जो एक sequence में लगाई जाती है, the keeping a machinery in a particular sequence. Okay, okay. ठीक है, order. Sir, Okay. warehousing, Warehousing. Okay. तो warehousing से क्या मतलब practices within warehousing or location of a warehouse? sir, the location of the warehouse, Okay, okay. where ठीक है, the product are being stored. where the products are being stored. Okay. So even the materials and resources available means labors and all the raw materials if which I will be requiring for my production, are they how much nearer are they or uh, such that kind of factors. Okay. अभी इसको दो तरह से देखते हैं. When you were having an option of choosing a college, what all factors did you take into consideration? Nearness to the home. Okay, first nearness to the home. Very good. And placement, good. Return on investments. Return on investments. बस इतना ही देखा था. Even the teaching quality and all the other factors. Teaching quality. Okay. अभी इसमें से कितने फैक्टर्स आप एक्चुअली एसेस कर सकते हो? Let us take up the first factor, nearness to the home. ठीक है, मुझे मालूम है कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए and connectivity, correct? That can be measured. Yes, sir. The second factor you said was placement. Placement वो भी आप कैसे मालूम करोगे? So जो ऑलरेडी उस कॉलेज से बाहर निकले हैं उनसे बात करके कॉलेज वेबसाइट पे जाके तो उधर से मालूम पड़ता है. Okay, so that is how you will assess that. The third factor was this. क्या बोला था? Return on investment. हाँ, return on investment. ये कैसे करेंगे? So that is not possible because हर student का package अलग रहेगा. Some might get 4, some might get 16, some might get 10. हाँ, but So individual people will need to calculate the ROI. We cannot take in but combined. But उसमें भी आप जब placement मालूम करते हो तो that time you do talk about भाई तेरा कितने का package हुआ? How much was your fees? Sir, honestly speaking, if I join any institute, the first thing I will say कि okay, I will get an ROI of this much. But actually में 2 साल बाद what will happen nobody knows. Correct. वो तो यार किसी को भी नहीं मालूम. वो 17 मार्च के पहले लोगों को भी नहीं मालूम था कि लॉकडाउन हो जाएगा. Correct sir. है ना? And किसी को ये भी नहीं मालूम है कि कल को तेरे को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी. Sir, what I mean to say is like it is predictable, but we cannot be sure about. So we can only just get some idea, okay, a rough estimate, which would for which the probability of likelihood would be more. Correct. Correct, sir. And when we say return on investment will talk about what is the average package that the student gets after moving out from that institute as compared to the fees that they pay. Return on investment तो यही होता है ना? Correct, sir. What is your investment? Investment is your fees that you are paying.
ओके, अब इसमें एक और चीज होती है कि कई बार हमारा कैलकुलेशन में हम लोग इन्वेस्टमेंट को साथ में कंसिडर नहीं करते हैं, हम रिटर्न सिर्फ देखते हैं, करेक्ट? सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। अभी जैसे अगर मान लो एक आदमी ने 100 रुपए डाले, हाँ, 100 रुपए डाले और उसको 120 रुपए मिले, और एक आदमी ने 2 रुपए डाला, उसको 4 रुपए मिला। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर वेयर? Definitely. High, sir. दो For रुपए 100 is almost 120%. Sorry, 20%, and for 2 it's almost double. Correct, correct. So now ROI, return on investment, okay, percentage wise definitely the 2 रुपए का 4 रुपए वाला looks more lucrative if we only just look at percentage, but in reality वहां पर आपको ओवरऑल उसमें if you look at returns सिर्फ 2 रुपए का फायदा हुआ है, whereas 100 रुपीज डाला तो वहां पर 20 रुपीज का फायदा हुआ। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ओके, जहां 100 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट था इज हायर, करेक्ट, इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट इन परसेंटेज इट इज वेरी लो, करेक्ट ना? Right, sir. Right. सो Yes, sir. आपको even ये चीजों को भी देखना चाहिए। when we talk about return on investment, definitely it is calculated as percentage, but in absolute terms भी क्या है? Okay, so not to just go by the numbers, but numbers in terms of percentage as well as in absolute terms, दोनों तरह से देखना चाहिए। Okay, or there was one more factor which you said, fourth one, I just forgot that. Teaching faculty. टीचिंग, उसको कैसे मेजर करेगा? सर वो भी हम लोग सीनियर से जो पास आउट उनसे बात करके हम लोग एक असेसमेंट लगा सकते हैं ना कि कैसा स्टाफ है। ओके, अब कैसा स्टाफ है, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। हाँ, Right? राइट, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्या दो जगह का एक साथ? No, sir, because No. the type of faculty in each and every institute will be different. The retention power of student is also a factor which we have to consider. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो अभी यहाँ पर ना देख, अभी मेरे को अगर दो कॉलेजेस हैं, एक में मान ले फीस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ओके, बट फैकल्टीज इतना अच्छा नहीं है, क्या करेंगे? दूसरा वाले में फैकल्टीज बहुत अच्छा है बट प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, अब क्या करेगा? विच वन वुड बी अ प्रेफर्ड वन? लोकेशन 1 और लोकेशन 2? लोकेशन 1 has good placements but poor faculty. Location 2, poor faculty, good placements. So it depends upon person to person. जिसको सिर्फ मतलब नॉलेज लेवल के लिए जो जा रहा है, he will prefer location 2, and the person who is going to opt for just for placements, he just needs money, he may go for location 1. Okay, ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन को आंसर करते हैं। How many of you have a preference for placement as compared to knowledge? Raise your hands. Okay, तीन ही लोग? Okay, so that means I can say rest of them have preference of knowledge over placements. Yes, sir. Yes, sir. नॉलेज रहेगा तभी प्लेसमेंट आएगा। नॉलेज रहेगा तभी प्लेसमेंट आएगा। I agree. सर वो एक्चुअली फुल करियर में यूज होने वाला है ना, मतलब इनिशियल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट फॉर योर एंटायर करियर ऑब्वियसली व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू अप्लाई दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर खुद के एक्सपीरियंस पे डिस्कस कर सकते हैं ना। See, I will share my experience with you.
एक बंदी थी हमारा ऑपरेशन स्पेशलाइजेशन में ही, और वो इधर कंपनी कुछ कुछ आई थी, बट उसमें से किसी में भी सेलेक्ट नहीं हुई. ओके, बट शी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हर नॉलेज पार्ट, क्योंकि उसने देखा कि हाँ ये इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, हाँ ये एस्पेक्ट्स जो मुझे नहीं आ रहे थे, and then she started working on it, and what she was not able to gain placement from the institute. Okay, but वो फिर बाद में बाहर से उसने अप्लाई किया and she got selected into Accenture. Okay, जैसे जैसे आप मेहनत करते हो उस हिसाब से होता है. She got selected into Accenture, and then उसके बाद में from Accenture she went to KPMG to Deloitte. Okay, so जो big 3 तो हो ही गया, बिग 4 में से बिग 3 तो उसका हो गया, करेक्ट. Now what happens is, it is obviously the knowledge that you should always work upon. Opportunities आपको या तो कॉलेज से मिलेगा, नहीं तो you will create your own. कभी कभी ये भी होता है कि you may start a bit slow in the beginning, but that doesn't mean that you will remain there only throughout your life. ओके, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. मेरा एक स्टूडेंट था, दिस ही इज अ ओल्ड स्टूडेंट, दैट मींस नॉट फ्रॉम आईएएस, फ्रॉम माय अर्लियर इंस्टीट्यूट. तो वो बंदा, ही वाज अ केमिकल इंजीनियर, तो उसको पहले तो उसी हिसाब से जॉब मिल नहीं रहा. तो कॉलेज से तो प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं था, बिकॉज दैट वाज अ स्टार्टिंग थिंग. तो उसको बाद में पर्सनल लेवल पर उसने ट्राई किया. ही वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग गाय, नॉलेज वाइज बहुत अच्छा, मतलब सिंसियरली काम करने वाला बंदा. एंड ही वाज एबल टू गेट सिलेक्टेड विद अ थर्ड पार्टी, नॉट that too not on their pay scale but on a contract. Okay, so वो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे उसने चालू किया at a lower scale. Then from there he gained knowledge, experience, and then he joined Godrej chemicals division में. Godrej के बाद में his next jump was BASF. Okay, BASF आपको पता है कि मतलब अगर हम आज के डेट में अगर केमिकल्स में बोलेंगे तो नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड. ओके, देन ही गॉट इनटू BASF, और BASF में भी जो उनके टॉप आइडेंटिफाइड लोग होते हैं, और दे आर who are promising leaders actually, who can be developed, nurtured, and converted into next level of CEOs. So he was identified as one of them. Okay, now today he has joined another company in which he is heading their Asia operations. अब देखो, from where he started and where he is today. Okay, so knowledge is definitely the primary thing, and knowledge comes only if you have that attitude for it. That means you keep on working for it. Okay, so अब यहाँ पर definitely हम ROI ये वो सब कुछ हम बात करते हैं, but there is another element also which actually plays along, and we never talk about it. Okay, it doesn't matter where we start, but it does matters where we end up. Okay, और वो that can always be defined and decided and controlled by you. Okay, so knowledge के लिए आप सब लोगों ने मतलब major share was for knowledge, and I also go with it. Placement is an outcome. If you have good knowledge, okay, so definitely yes. Ultimate objective of सबका is placement and not just knowledge. Knowledge is the vehicle to be used. Okay, are we clear? Yes, sir. तो अपने efforts उसी तरह से put up करो. Apply yourself in learning what is the trend, what is actually happening in the industry, कौन-कौन से concepts हैं जो वो लोग use कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग use कर सकते हैं. Okay, that will help you in actually being the most preferred one. Okay, now coming back, so when we what do we mean by another concept called as facility?
So yours facility ना? Yes. What do we mean by facility? तो मतलब वही मतलब फैक्ट्री लोकेशन के लिए मैं फैसिलिटीज मतलब कि गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, मुझे ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहाँ पे प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं, या फिर जो लेबर रिसोर्सेज मुझे जो चाहिए तो वो मुझे वहाँ पे मिलेंगे या नहीं. सो दैट ऑल द फैसिलिटीज विच विल वी लुक बिफोर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री. Okay, good. What about Domino's Pizza Center? Is that a facility? Yes, sir. So that Okay. would be a facility for the class people, not like for the mass. If there is a factory, then laborers won't be going to Domino's, sir. Okay. वहाँ पर बैक ऑपरेशंस में भी कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली बनाने का काम करते हैं. Aren't they laborers? Yes, sir. जो सेल्समैन है जो काउंटर पे है, isn't he a white collar labor Yes, or a sir. blue collar? What about the store in charge? Is he also a labor? यस सर. वो क्या है ना, हम लोगों को मतलब इंग्लिश में बोल करके वो ताकि अच्छा लगे, we call them as executives or store in charge. Okay, but he is actually a skilled labor, but with managerial abilities. What about the one who is working in the back end? He is a skilled labor, but with less of managerial abilities. Correct? Yes, Correct, sir. yes? यस सर. So ultimately, ओनर ही एक ही है जो कि लेबर नहीं है, बाकी इवन वीपी वगैरह भी इज अल्टीमेटली अ लेबर. बराबर ना सर? बट अगर उसको लेबर बोलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. राइट. So how do we look at it and how do we put it across is what actually matters. So anything which is going to facilitate my work is a facility. Okay, anything. So when we talk about a government facilities like अभी वो जो उनका मेडिक्लेम का है ना, कौन सा है वो, ऐसे नाम है, आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत. Is that also a facility? For people, yes sir. For people, yes. How come is that a facility? Okay, let us say it's not a facility. We'll start with that assumption. It's not a facility. If it is not there, okay, so क्या होगा जब कोई बंदा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो he has to shell money from his pocket. Yes, sir. So उसके लिए वो एक्सपेंसिव हो जाएगा. Yes. अब अगर मान लो ये फैसिलिटी नहीं, ये स्कीम है, तो इवन ही कैन गेट बेटर ट्रीटमेंट एट लेसर कॉस्ट. Right. That's the reason why we call it as a facility, because it is facilitating the medical facilities for him, extending the medical facilities for him. जितना उसका capability था, he is able to achieve more than what he actually would have been able to. So, sir, basically, any now I'm going out of context for the timing. No issues. So, basically, any offerings by any company is actually a facility. A discount is a facility. Okay, got it. अभी देखिए जैसे प्यूमा, नाइके, ठीक है, एडिडास, फिला. If they are not extending discounts, can every one of us
still afford it? Probably not. I'm very sure about myself. I'm not. Right, sir. Correct? Right. अब आप में से भी कई लोग होंगे you will go in for it when that facility is there with you. Now, it can be in two forms. Okay. If I am getting a facility of EMI payment, can I go for expensive ones? No, sir. Yeah. है ना? हाँ, so then my affordability basically increases. मैंने तो एक बार पागल पे जैसे 1,38,000 का टीवी भी खरीदा. सर बहुत महंगा है. बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. और ये मैं आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ. बाप रे. ओके, वो बाद में मेरे को समझ में आया कि ये एंड व्हाट वाज द ड्राइवर, यार कितना ईएमआई आएगा. And that's how I went ahead with it. Right? This was basically a problem. अब ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं. अपने से कितने लोग ऐसे भी होंगे who could have not been able to afford, for example, if I talk about myself, okay, if I have to buy a home, okay, and loan facility is not there, can I still buy a home? No, sir. No, sir. So loan is a facility. So anything which facilitates the outcome or changes the outcome can be termed as a facility. अगर मैं आपको पेन देता हूँ लिखने के लिए, you are able to record data, correct? But what is the facility? What is it which is facilitating it? The pen. Okay. As of now, online lectures are getting facilitated because of platforms like Microsoft Teams, Zoom, Google Classrooms, correct? Yes, sir. Right. So these are facilities. Are we clear with this? Yes, sir. Now I am very much clear. Okay. Now, there are some, when we talk about facility location, okay, location means how to be located, which facility would be a most preferred one. अभी जैसे मैं मान लो Microsoft Teams ले लिया, Zoom ले लिया और Google Classroom ले लिया. Why am I going for Microsoft Teams and not Zoom? Cost component, requirement of adequate infrastructure. Okay, good. So even the other facilities which Even Teams the is providing. interface as well. Okay. Now, when we are talking about other facilities, we are actually talking about, see, let us look at other factors which are actually facilitating it. With Microsoft Teams, I can record your attendance too. I can simply just download an Excel sheet, which also gives me information in terms of when did you log in. If there was a network failure, you got logged out, you have again logged in. So it gives me the log. Do I get that thing in Zoom? Do I get the same thing in Google Classroom? No, sir. So now, when I can I share notes from Google Classroom? It is only possible when we are in an online session. Can we do it during an offline session? Zoom में you can do it only during online session. When you are in an offline session, you cannot. It is possible in Google Classroom. It is possible in Microsoft Teams also. Correct? But attendance ka it is not possible in Google Classroom. So, there are multiple factors which you take into consideration. One more thing. How many people can be accommodated within a Teams meeting? How many people can be accommodated in Google Classroom meeting? And how many of them can be accommodated using Zoom?
then the data bandwidth that is being used. Okay, so multiple factors are taken into consideration. Now what you do is you prioritize your factors depending upon your requirements. If I damn care about the attendance, okay, I have to address my team, whether they are present or not present. मैं कुछ एक और लंबा से कुछ ये कर रहा हूँ. Oh, first time I am seeing this message. 5 minutes left in the meeting. कैसे क्यों आ रहा है? Even we are seeing it first time, sir. No, sir. It's a new update. Okay. कोई बात नहीं. We'll have to see. Anyway, I will download the attendance also. Okay. Now what happens here is you always prioritize. You identify the factors. You prioritize the factors, and then based on that you decide which one would be more lucrative one and which scores the best. That is what is called as a factor rating method, which we'll be learning here in this chapter also. Okay. That is one thing that you do. But आपने अभी भी जो factors बोले, your factors can be quantitative as well as qualitative. Some of the factors which you can quantify, जैसे हमने बोला nearness to your place, तो आपने बोला इतना kilometers distance है, correct? But वहीं पर when we are talking about factors like quality of the faculty, it's a qualitative factor. So can I compare two locations, two facilities in terms of quantitative plus qualitative, and also the other one in terms of quantitative and qualitative. सिर्फ quantitative quantitative होता तो मैं easily compare कर सकता था, ठीक है? But when it is quantitative plus qualitative, so even qualitative factors have to be converted into a quantitative ones, and then only you can actually compare them, correct? So we will see how it is being done. How do we identify where to actually set up? Say, for example, you are a multi-specialty hospital and you have to set up another unit, another hospital somewhere else. So where you will prefer to actually set it up? What all factors will you take into consideration? Say heart specialty है आपका. क्या-क्या चीजें आप देखो. हेलो सर, जो डॉक्टर्स हम लोग के हॉस्पिटल में ट्रीट करेंगे वो मतलब जहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ उसके आसपास कोई है कि नहीं, मतलब उनको नियर बाय होना चाहिए. ओके, सो दैट मींस आपके लिए यहाँ पर स्किल्ड लेबर काफी इम्पोर्टेंट रहेगा. एब्सोल्युटली सर. है ना? सो दैट यू आर एबल टू गिव क्वालिटी वैल्यू टू योर कस्टमर. ओके, और व्हाट वुड बी द अदर फैक्टर्स? Hello? Yes, sir. We are thinking. अच्छा. भाई इतना टाइम सर, जो हम लोग को जो मतलब मटेरियल प्रोवाइड, मतलब जो मेडिकल्स और वो मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं, वो भी अगर हम किसी फैक्ट्री से परचेस करें या जो प्लांट से परचेस करे होंगे, तो वो भी उसका भी लोकेशन देखेंगे कि जो हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए वो होगा. So availability of the pharmacy, availability of the medical equipments, supplier, yes. Medical equipment suppliers. Yes. Patients के बारे में बात नहीं कर रहा है कोई. Patient भी तो चाहिए ना. हाँ, जंगल में ले जाकर सेटअप करेगा तो चलेगा क्या? नहीं सर, सिटी लोकेशन चाहिए. नो सर. ओके, आसपास के उधर पर से पेशेंट्स इनफ्लो होने के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी. यस सर. यस सर. ठीक है, फिर वो जगह का कॉस्ट. हाँ सर, वो भी फैक्टर है. करेक्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज यू विल टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल दीस थिंग्स. बराबर. अब उसमें अगर आपको कोई एक जगह पर गवर्नमेंट के पास से सस्ते दाम में जमीन मिल रही है टू सेट इट अप, हाँ,
और दूसरी जगह पर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिल रही है and you have to invest from your own pocket, what will you do? Which one would be a preferred one? Is a government Government area. facility. आप लोगों को पता है अपना वो जो ये जो जूहू बीच के उधर पे जो होटल्स हैं बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार, उन लोगों को लैंड का रेंट पे करना पड़ता है. कितना रेंट पे करते हैं, आइडिया है कुछ टू द गवर्नमेंट? लीज Somewhere around crores. 5,000-6,000 per month. अच्छा ठीक है, एक बार खुद से चेक कीजिएगा. न्यूज वगैरह ज्यादा ऐसे देखोगे ना तो उसमें मालूम पड़ता है कि उनको लीज रिन्यू करने के लिए कितना पैसा लगा. जस्ट सर्च मार के देखो, यू विल कम टू नो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन यू हियर दैट. आपको ऐसे लगने लगेगा कि उतनी बड़ी जगह तो मैं भी खरीद सकता हूँ. ओके सो और आप में से कुछ लोगों की पॉकेट मनी से भी काम हो जाएगा. डिपेंड्स, पॉकेट मनी ज्यादा होगी तो. एनीवे, I believe you guys are able to understand exactly where I'm coming to. So we will be talking about setting up a new factory, a warehouse, a service center, or you can also say starting up a bank branch. These are nothing but facilities. How do we identify what would be the best location for them? Restaurants वगैरह ले लीजिए, cinema halls ले लीजिए. Okay? Yes. Are we clear? So that is what we are going to talk about in this chapter. I believe the people who will be going in for the presentation should be ready. Okay. Since the time is up, we'll end it here only.